Testing, testing. Imagination is more important than knowledge, for knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution, said Albert Einstein. Good evening to one and all present here. I am Pranali Wagmare, the General Secretary of RAIT ACM Student Chapter, and my co-hosts, Ms. Khushi Patel, the Content Chief, and Ms. Akanksha Matpati, a member of RAIT ACM, would like to welcome you to this very interesting workshop on Git and version control, organized by RAIT ACM Student Chapter. Now, I would like to invite my co-host Khushi to continue. Thank you, Pranali ma'am. A lot of you might know about programming and might know a few computer languages like C, C++. Some of you might be familiar with Java and Python too. But many of us are new to this and are very keen to learn this and apply it in real life. When we enter this world of programming and coding, we hear many new terms, and one of them is GitHub. I'm sure many of you have heard this term from seniors or from some other people that are contributing to open source. Many of us are willing to work and contribute to open source. But for that, we need to have clarity. It is said that if a person is willing to learn something, then there is no specific age, and it is never too late. Git and GitHub is something that a lot of people are not clear about. Some people think that it is interconnected like Java and JavaScript. But the truth is that Git and GitHub are more closely connected than that of Java and JavaScript. Well, today we all have a chance to understand GitHub and version control with clarity. Now, I would like to invite my co-host Akansha Mathpati to continue. Thank you, Khushi. Today, all your queries starting from what is GitHub to how to contribute to it would be cleared in this one session. Some of the queries that would be cleared in this session are what is Git and how to set up Git software, what is GitHub and its importance, what are the benefits of using it and how to work on it with ease, version control, basic commands of Git, projects in Git, and also graphical representation and much more. We will also be having a Q&A session towards the end of our webinar in which all your queries and doubts would be cleared by our speaker, Mr. Danish Sheikh. He is a freelance full-stack web developer, UI developer. Now, I would like to invite Danish sir to start with the session. Hello, so could you please start sharing your screen? Okay. Hello, my name is Danish Sheikh. I am a freelance full stack web developer. I welcome everyone over here to the seminar on Git and GitHub. Am I audible? Okay. So as it is seen, Git and GitHub, they both look similar to everyone, but there is a very big difference between Git and GitHub. So today in this seminar, we are going to work and see what actually the big difference between Git and GitHub is, what Git is used for, what GitHub is used for. Okay, so we have divided our particular sessions in three different parts. First, we are going to see what actually the Git is. Then we are going to see the GitHub. Then we will get a complete explanation on how Git and GitHub is used. There we will see what is a local repository, how to make it a remote repository,
what are the basic commands in Git which are being used, what are branches, and complete overall explanation and the presentation of Git and GitHub. Okay, so let's start. Over and all, before learning any of the technology, the first step that we have to proceed is the documentation or the actual explanation of the system. So let's see what Git actually is. As people see, Git and GitHub are two similar technologies, but there is a very big difference between both of these. As Git is a distributed version control system, it is a version control system. If we see completely over here, that Git is actually a software and GitHub is a service. I'll explain more about this. First, let's come to a point. Git is a version control system. In this version control system, we are having various facilities to merge our code, to work in a team. Like as I come to the point, while working in a team, it becomes very difficult for the manager or for the head to collaborate the work and the features of each and every members uh, to the actual code and the actual main workflow. As even I am a full stack web developer, it becomes difficult for me to work on the actual feature of the code. Wait, let me come into Hindi. So, as we all have seen, give it a bit. Okay, let me come to the GitHub actually, Windows D. So over here, we are going GitHub. Okay. So let me start with my introduction. My name is Danish Sheikh. I welcome everyone over here for learning of Git and GitHub. As I am a full stack web developer, I actually have to work on the starting of the code from the analysis, designing, implementation, and the deployment of the project. But while working in all this, it becomes very difficult for me or for everyone to see each and every line of the system is accurate and perfect. Okay. So here, as I have said, Git and GitHub, these both are two different technologies. So Git is a version control system. Let me come on to the GitHub. See, over here, what GitHub says, it is a subsidiary of Microsoft which provides hosting for software development version control system using Git. मतलब GitHub हमें क्या provide करता है? GitHub is a hosting space for the Gits. Okay, Git is a version control system. Git हमारा version control system है, and GitHub उसे store करने की ability provide करता है. Okay, so here we have seen two different things. अब मैं आपको इसे अच्छे से और explain करता हूँ. Okay, let me come on to the Git and let's start with a simple repository initialization. We will go with the flow of our particular documentation. Here, introduction to Git and how to set up Git. Introduction to Git is a simple introduction. Git is a version control system. ये हमें ability provide करता है हमारे कोड के फ्लो को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके उसे इंटीग्रेट करने में. ओके, सो अब हमें गिट से स्टार्ट कैसे करना है? हाउ डू वी हैव टू स्टार्ट विद द गिट? फर्स्टली वी हैव टू the basic thing in the Git is a folder. Like over here, I'll create a new folder. जैसे कि हम कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जस्ट थिंक ऑन इट. इन दिस सेमिनार आई विल शो यू
how I am creating a simple publicity website and managing it with Git. Okay, so let's GitHub project 1. So this is the name of my project. ये मेरे project का नाम है. I have initialized this project. Now, as to edit this code, I will simply bring this code into my IDE text editor. Okay. Here, this folder is completely empty. Okay. Now, I will open this folder in my terminal. Open in integrated terminal. Here, when I list it up, यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एक भी फाइल्स अवेलेबल नहीं है. Git and GitHub is the thing जो we have to use it from the start of the project till the end of the project. Now I'll show you the magic of Git. Here there is no file available over here. The few commands in the between that सबसे पहला कमांड जो हमें सबसे ज्यादा यूज में आता है वो है git initialize. Git initialize ये कमांड यूज करने से हमारा जो फोल्डर है वो एक GitHub रिपोजिटरी बन जाता है. See, let's return initialize empty Git repository in my particular folder. And one more thing over here is the .git. Okay, .git is a folder in which हमारा जितना भी GitHub का execution, like GitHub is a software, it also needs to store some data. So GitHub का Git का जितना भी data है वो इस .git repository में जाके store होता है. So let me open and show you this .git repository. It is a hidden repository. It is a hidden folder. So ये आपको ऐसे नहीं दिखेगा. You have to open the .git. Here यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. Hooks, info, refs, config. In the config here we will have all the explosives up. Okay, so now this is my Git folder. We are right now working on the local. We are just working on Git. We are not working on GitHub. अभी हम GitHub पे जरा भी वर्क नहीं कर रहे. मैं सबसे पहले आपको इसके अंदर दिखाऊंगा Git कैसे यूज करते हैं एक्चुअली एंड Git से GitHub के बीच में कितना डिफरेंस है. ओके, सो ओवर हियर इन दिस Git देयर इज नो फोल्डर ओवर हियर. यहाँ पर एक भी फोल्डर नहीं है. मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ index.html. ओके, नाउ मैं जैसे यहाँ टाइप करूँगा git status, वी कैन सी, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कमिट्स नहीं है बट अनट्रैक्ड फाइल्स. ओके, मैं आपको कोड इसलिए शो कर रहा हूँ, मतलब GitHub का प्रोसेस, कि इसके बाद जब आपको GitHub के पर्टिकुलर स्टैजिंग एरियाज एंड रिपोजिटरीज के बारे में मैं बताऊंगा, सो उसके बाद आपका जितना भी डाउट्स है वो सब ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएगा. ओके, सो नाउ GitHub के अंदर मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया है index.html. ओके, अब मैं इसे ऐड करता हूं, git add. देन ग्रीन. नाउ GitHub के लाइक स्टेजिंग एरिया में स्टैजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है. नाउ व्हेन आई कमिट दिस, git commit -m. M is for message in it, like initial commit. Okay, एंड अब मैं जैसे ही यहाँ पर git status लिखता हूँ, here it will be shown nothing to commit, working tree is clean. ये प्रोसेस मैं आपको एक और बार फिर से बताता हूँ बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दी
development or working of Git and GitHub. This is my folder, Git GitHub. I have simply deleted this folder. Oh, it is open over here. Remove folder from workspace. Okay. Let's come back to start. Right now, GitHub project. By the end of this seminar, all of you, or maybe most of you, are going to get completely familiar with how to use Git and GitHub. This is my surety. Okay. So I have created a folder, Git project 1. I will initialize into my workspace. मैंने इसे मेरी workspace में डाला. Now open a integrated terminal. Like हम directly इसे command prompt में भी open कर सकते हैं, बस particular location को open करना है. Right now ये कोई Git repository नहीं है. तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Git status, let me zoom in. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Git status, see, fiddle, not a Git repository. Okay, अब तक के हमने GitHub का नाम भी नहीं लिया है. We are now just now working on Git, not a Git repository. उसके लिए हमारा सबसे पहला कमांड क्या है? अगर किसी को लिखना है ये सारी चीजें तो आप लिख लो. It will be much better for you. Git initialize. Initialize empty repository status. Now this is a Git repository. हमें Git initialize लिखना है. Then हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें फाइल्स क्रिएट करना है. index.html. अब अगर मैं यहाँ Git status डालता हूँ, सी मेरी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है. I will add this git add dot. यहाँ पर अभी मुझे लिखना है git add dot. सबसे पहला कमांड है git initialize, then फाइल्स क्रिएट करना है जो भी है. git add dot. Dot will add all the files. Okay. Then we have to write C. Now I will simply write git commit message, then initial, or whatever I want to write in it. ओके, सो ये मेरी के अंदर एट संडे 29 नवंबर 1820 को हमने एक कमिट कर दिया है प्लस 5:30 हमारे इंडियन लोकल टाइम पे. नाउ आई विल राइट समथिंग इन दिस प्रोजेक्ट. सो व्हाट आई डू, आई सिंपली यूज बूटस्ट्रैप बिकॉज इट्स गोना सेव माय टाइम. git hub project 1. अब मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया है. ओके, लेट्स सी git हमें क्या शो करता है. git status. ओके, changes not stashed. यहाँ पर अभी हमें कमांड मतलब यहाँ पर हमें डिटेल्स में आ रहा है मॉडिफाइड. लाइक प्रीवियसली वी वर गेटिंग द थिंग एज न्यू फाइल. ओके, नाउ वी आर गेटिंग द थिंग एज मॉडिफाइड. यू नो, आई कैन अंडरस्टैंड ये सब अभी आप लोगों को कितना डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट इन जस्ट अ फ्यू पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोना बिकम too easy because I am going to show you a new technique for all this. Okay, now it has been modified. ये हमारा GitHub ने चेक कर लिया. This file has been modified. Now what we will do, we will add this and we will technique it. Here I will write a message as included bootstrap. Okay, so we have got
this commit over here. Let's see git status. No status. I will write git logs. See, हमें ऊपर previous logs के अंदर git log. Okay, so you all can see we have a initialize commit and included bootstrap. Now I will make even more changes, as I will include a navigation bar. Nav bar. Okay, let's open this file. यहाँ पर आपको सिर्फ गिट एंड गिटहब शो नहीं होगा, यहाँ पर आपको ये शो होगा कि आपको एक प्रोजेक्ट के अंदर गिट एंड गिटहब कैसे यूज करना है. लेट मी ओपन अप दिस फाइल. ओके, मेरा यहाँ पर नेविगेशन बार अवेलेबल है. लेट मी इंसर्ट अ जंबोट्रॉन. ओके, एंड फ्यू कार्ड्स. ओके, सी यहाँ पर मेरा ये पेज रेडी हो चुका है. लेट मी पुट दिस इन अ कंटेनर. If anyone is having any doubts, put them in the comment section. We will come back to you at the end. We will have a complete 5 to 15 to 10 minutes session over there for that. See, now this is my page is ready over here. You all can see I have lots of code over here. Let me open my terminal back. Okay, let me zoom up over here. हाँ, okay, so as you all can see हमने फाइल में changes किया है. Now I will write git status. Right now अभी तक मैं वर्क कर रहा हूँ सिर्फ लोकल पे, जस्ट फॉर माई साइड. अभी हम टीम कोलैबोरेशन में वर्क नहीं कर रहे. गिट इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, बट गिट ओनली वर्क्स ऑन लोकल. ये सिर्फ हमारे लोकल पे चलता है बाय दी फर्स्ट स्टेज, जब तक हम इसे रिमोट नहीं बनाते हैं. हियर हमारी एक फाइल मॉडिफाइड हुआ है, index.html. अगर मुझे सिर्फ index.html ऐड करना है तो मैं आपको एक और फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ. न्यू फाइल, क्लोज दिस अप, about.html. ओके, अभी हमने यहाँ पर एक और न्यू फाइल क्रिएट किया है. लेट्स राइट git status. Okay, so after this git status I am getting two untracked changes, sorry, one untracked changes and one not stashed commit. ये सब का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा. Untracked files. I was going too fast in this chart. Okay, let's, if I write git add dot, this one git add dot, ये कमांड हमारा दोनों फाइल्स को स्टैजिंग एरियाज के अंदर डाल देगा. बट इन दिस सिचुएशन हमें बस खाली इंडेक्स फाइल को डालना है. जैसे कि कभी आपको सिचुएशन आ सकती है index.html. लेट्स सी गेट स्टेटस में लिखना है गेट स्टेटस सी. Our both files are in add area. Now git commit message home page structure ready. Okay, so in these things आपको इतना तो पता चल गया होगा कि गिट के अंदर हम नॉर्मल फाइल्स को, आपको इतने कमांड्स का तो पता चल गया होगा, ऐड, कमिट, स्टेटस एंड इनिशियलाइज. लाइक बेसिकली इनिशियलाइज, स्टेटस, ऐड एंड कमिट.
ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी गिट और क्या क्या बताता है. ओके, नाउ अब हम यहाँ जब आते हैं, सो फ्यू ऑफ द थिंग्स वी आर गेटिंग, जैसे अगर मैं इसमें मास्टर लिखता हूँ, maybe this is not the right time, git branches. Okay, let me hide this. See, यहाँ पर मेरे पास एक ब्रांच अवेलेबल है मास्टर. ओके, मैं आपको डायरेक्टली गिट हब तक के लेके जाता हूँ. ओके, अब जो भी मेरा ये कोड है, ये बस खाली मेरे लोकल रिपोजिटरी में अवेलेबल है, बट आई वांट टू पुट दिस ऑन गिटहब. गिटहब क्या है हमारा? व्हाट इज गिटहब? गिटहब, which subsidiary of Microsoft provides hosting for software development and version control using Git. Okay, so अगर आपके दिमाग में ऐसा मिथ है कि Git and GitHub सेम है, so please remove that, because GitHub जैसे और भी अवेलेबल है हमारे पास, जैसे Bit Bucket. This is also a same thing. If you see, okay, it is also a hosting service. मतलब GitHub क्या है? It is a hosting service and Git is a software. Okay, Git is a version control system. This is basically a software. So अब हमें इस hosting का use करना है because GitHub is providing us this all for free. So let me show you. I'll simply go on my GitHub. There are too many ways to take your code from local repository to GitHub. Okay, let me come over here. As till now we have seen introduction of Git, how to initialize local repository, and the 3 stages. First stage was out of the, I'll show you up over here, staging area. See, these are the 3 stages of Git: working directory, staging area, and the repository. Okay, so working directory हम जिसमें कोड कर रहे हैं, जब हम git add यूज करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया में जाता है, जब हम कमिट यूज करते हैं तो वो रिपोजिटरी में जाता है. राइट नाउ अब तक हमारी रिपोजिटरी लोकल थी, बट अब हम उस रिपोजिटरी को गिटहब पे लेके जाते हैं. ठीक है, लेट्स सी. सो टू टेक अ लोकल रिपोजिटरी टू गिटहब, ओके, फ्रॉम कमांड लाइन हमारा प्रोसेस है, we have to click here on a new repository and insert the name of repository. ये public private क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे. Okay, what is the name of my repository? GitHub project 1. We can also keep separate names. GitHub project 1. Okay, let's keep this repository public and create repository. Everything is too simple over here. जैसे ही मैंने ये रिपोजिटरी क्रिएट किया, GitHub has given me few quick steps. मुझे कुछ easy steps GitHub खुद बताता है. Before that, it has also given me as setup desktop. GitHub desktop कैसे setup करना है वो भी हम आपको बताएंगे. Okay, अगर न्यू रिपोजिटरी हम कमांड लाइन से क्रिएट करते हैं तो GitHub initialize, उसमें रीड में ऐड करना है, फर्स्ट कमिट, ब्रांच सेटअप करना है. व्हाई एम आई शोइंग ऑल दिस टू यू कि कभी इन केस आपको कोई भी डिफिकल्टीज आए, सो आप डायरेक्ट लाइक ब्रांड की एक्चुअल वेबसाइट से रेफरेंस ले सकते हो. ओके, गिट ब्रांचेस, देन रिमोट ऐड ओरिजिन. इस तरीके से हमारी न्यू रिपोजिटरी कमांड लाइन में इस कोड से क्रिएट होती है. बट इस वक्त हमारी रिपोजिटरी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, हमने ये जो भी कोड लिखा है ये मुझे इसे लाना है गिटहब पे. तो यहाँ कुछ कमांड्स दिए हुए हैं. गिट रिमोट ऐड, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको यहाँ से कॉपी करना है. कॉपी,
अब ये रिपोजिटरी मेरी रिमोट रिपोजिटरी पे जा चुकी है, लेकिन आफ्टर फ्यू स्टेप्स इसने ओरिजिन ऐड किया है। अगर आपको ये देखना है तो आई विल लीव दिस। ओके, फर्स्ट स्टेप टू मेक अ लोकल रिपोजिटरी, a remote repository, git branch, git remote add, then git branch, a new branch is created over here. अब git push origin, अब git push u origin, enter. Now this is uploading all my code to GitHub, but GitHub also needs authentication ना, हम किसी की भी रिपोजिटरी में कुछ नहीं डाल सकते. So here I have to insert my username and my password and login. Okay, so ये GitHub का एक इशू है कि वहां से लॉगिन नहीं होता है. So it will directly bring you up over here. Check Danish 04 and my password. तो एक लोकल रिपोजिटरी को रिमोट पे लेके जाने के लिए हमने क्या किया? We just followed the GitHub. Okay, see, you can see over here. I'll show you. First I'll show and then I'll explain. Now as I reload my page, जैसे मैं मेरा पेज रीलोड करता हूँ, oh, you can see मेरे सारे पेजेस यहाँ GitHub पे आ चुके हैं. Okay, all my pages are up over here at GitHub. यहाँ अब GitHub के बारे में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट बिफोर दैट वी विल रिपीट दिस प्रोसेस वंस अगेन कि सबको एकदम बाय हार्ट हो जाए. ओके, सो लेट मी कम ओवर हियर एट सेटिंग्स, डिलीट दिस रिपोजिटरी. I will delete this repository. I understand how it gets difficult for someone to just see and by heart it, but right now you can see everything. Git status, let me clear this up. Okay, so हमें ये हमारी रिपोजिटरी अब फिर से बन गई है लोकल. ये मेरे GitHub पे अवेलेबल नहीं है. अब मैं इसे GitHub तक लेके जाता हूँ. फर्स्ट स्टेप टू मेक अ पुश अ लोकल रिपोजिटरी टू GitHub, हमें क्लिक करना है न्यू पे. Sir, यस, sorry to interrupt, but can you please repeat how to remote access on GitHub? how to, हाँ, I am showing that only. How to take a local repository to GitHub. a local repository को remote repository कैसे बनाना है. Okay, this only ना. Yes, sir, but the people are saying that they want you to repeat it again. हाँ, yeah, I am repeating, I know. Okay, okay, so this is a process over here. मैंने इसीलिए डिलीट किया कि हम फिर से रीइनिशियलाइज कर सकते हैं. ओके, लेट मी कम बैक ओवर टू माय GitHub. ओके, ये हमारी लोकल रिपोजिटरी है GitHub प्रोजेक्ट 1. इसका गिट स्टेटस चेक करते हैं. मतलब आपके आज तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स बने हुए आप उन्हें GitHub पे डाल सकते हो. यू जस्ट हैव टू गिट इनिशियलाइज देम, गिट कमिट, गिट ऐड. इसके अंदर से मैं पूरा GitHub भी हटा देता हूँ. इट्स बेटर टू मतलब इसमें से गिट उड़ाना है तो सिर्फ ये डॉट गिट का फोल्डर डिलीट करने से आपका सारा GitHub का लॉग्स उड़ जाता है. ओके, डिलीट. ओके, अब अगर मैं इस रिपोजिटरी में हूँ एंड मैं यहाँ चेक करता हूँ गिट स्टेटस, सी, ये मेरी रिपोजिटरी गिट नहीं बता रही है. मतलब समझ लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ऑलरेडी बना के रखा है, अब आपको उसे GitHub पे लेके जाना है. जैसे मैंने ये एक पेज बनाया है. ओके, अब मुझे इसे GitHub पे लेके जाना है. सो आई विल सिंपली गिट इनिशियलाइज. ये मेरी रिपोजिटरी बन गई गिट रिपोजिटरी. आई विल चेक द स्टेटस, गिट स्टेटस. ये सारी फाइल्स मेरे उस फोल्डर के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर अवेलेबल है. आई विल गिट ऐड ऑल द फाइल्स.
again status. Okay, see, and now come down. See, ये मेरी दो फाइल यहाँ ऐड हो गई है, git commit message initialize. ओके, सी, ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया है गिट, जो कि नॉन गिट था अब तक, मैंने इसे नॉन गिट बना दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज नॉट ए गिट रिपोजिटरी, अब ये एक गिट रिपोजिटरी बन गई है। अब मुझे इसे गिटहब तक के लेके जाना है। ओके, सो आई विल कम हियर ऑन द वेबसाइट ऑफ गिटहब। मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा, आई विल नेम द प्रोजेक्ट गिटहब प्रोजेक्ट। वी कैन ऑल्सो चेंज द नेम, हाँ हम बाद में नेम भी चेंज कर सकते हैं। ओके, क्लोन रिपोजिटरी, सॉरी क्रिएट रिपोजिटरी। यहाँ ये रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब यहाँ गिटहब बोल रहा है आपकी ये न्यू रिपोजिटरी है या आपको आपका एग्जिस्टिंग कोड पुश करना है। सो एग्जिस्टिंग कोड पुश करना है। आई विल कॉपी दिस कमांड, आई विल कम टू माय कमांड लाइन एंड आई विल पेस्ट दिस। मैंने ये कमांड को पेस्ट किया। आई विल अगेन कम ओवर हियर, कॉपी दी सेकेंड कमांड एंड मैंने इसे भी पेस्ट कर दिया। अगेन ये ओरिजिन बना दिया है, गेट यू पुश ओरिजिन मेन। ओके, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इवन फर्दर, आप अभी इंटरप्ट कर सकते हैं। आई डोंट ये दिस इज नॉट गोना वर्क, दिस वन, दिस पासवर्ड एरिया। ओके, इट विल ब्रिंग इट इन दिस बैक ओवर हियर। ओके, ये सारा कोड अभी हमारा गिटहब पे पुश हो जा रहा है मैंने। अब मैं इस पेज को रीलोड करूंगा, इस पेज को रीलोड किया। सी, ऑल माई कोड इज अप ओवर हियर, बट दिस टाइम हमने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट किया था उस हिसाब से आया है। ठीक है, सो right now till now you all have seen it is getting very much difficult to work with git. okay, git हमें कमांड लाइन का सपोर्ट देता है बस खाली, मतलब यहाँ से इतने सारे कमांड कौन याद रखेगा, और अगर कोई याद भी रखता है इज अ प्रो, बट इट gets difficult to type so much and to execute so much for a newcomer or for a new person. So GitHub ने Git की इस सर्विस को और भी ज्यादा इजी कर दिया using a software GitHub Desktop. Okay, so this is a software name as GitHub Desktop and it is available for Windows and Mac OS. Okay, I have, मेरे पास ये अभी already downloaded है. So it is a very simple process, आप easily इसे initialize कर सकते हैं. This is my GitHub Desktop. अब मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा. We are slow by slow coming over here. Introduction to Git, how to set up. Now we are coming over here to GitHub Desktop. जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा Git हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है. भले से ये हमें सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. फॉर द न्यू कमर्स दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल गोना गेट इजी एंड इजी. अब यहाँ पर इस GitHub डेस्कटॉप के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी रहती है इन दिस चार्ट, जैसे आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड GitHub का. फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट इज वेरी मच इजी, लाइक सेटिंग अप अ गूगल अकाउंट. ओके, जो GitHub का अकाउंट है वही यहाँ डालना पड़ता है. ओके, इन द GitHub डेस्कटॉप यहाँ पर हमारे पास एक रिपोजिटरी ऐड करने के लिए फ्यू ऑप्शंस दिए हुए हैं. जैसे कि इससे हम रिपोजिटरी क्लोन कर सकते हैं, इससे न्यू रिपोजिटरी भी बना सकते हैं, और इससे एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी भी डाल सकते हैं. क्लोन मतलब मैं GitHub से यहाँ रिपोजिटरी ला सकता हूँ मेरे सिस्टम में. न्यू रिपोजिटरी मतलब इससे नया रिपोजिटरी बना सकता हूँ.
एंड एग्जिस्टिंग मतलब जो मेरे कंप्यूटर में है वो मुझे इसमें डालना है. सो यहाँ पर हमें पहले करंटली इधर कंप्यूटर में अवेलेबल है एड एग्जिस्टिंग. तो जैसे ही मैंने इधर एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, इट इज टेलिंग मी टू सिलेक्ट द लोकल पाथ. मुझे लोकल पाथ सिलेक्ट करना है. ओके मेरा यहाँ लोकल पाथ है डेस्कटॉप, गिट एंड गिटहब, प्रोजेक्ट 1. एज आई सिलेक्ट दिस फोल्डर, एड रिपोजिटरी. ओके सी, ये रिपोजिटरी मेरी यहाँ पर आ गई. अब जहां जो के गिटहब के अंदर हमें जो भी कोड है वो देखना बहुत डिफिकल्ट था, यहाँ हम डायरेक्टली हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हैं. ओके यहाँ मैंने जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक किया, इट इज शोइंग मी इनिशियल कमिट. मेरे इनिशियल कमिट में क्या क्या पेजेस थे. ओके अबाउट पेज एंड इंडेक्स पेज. नाउ इट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग. सो आपने देखा कि गिटहब डेस्कटॉप के अंदर मुझे रिपोजिटरी कैसे डालना है. अब गिटहब डेस्कटॉप के अंदर मुझे एक इससे न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करना है, जैसे कि अभी तक के हम यहां से क्रिएट कर रहे थे यूजिंग ऑल दिस कमांड्स, लॉन्ग एंड लॉन्ग कमांड्स. ओके सो फॉर अ बेसिक पर्सन आपको ये कमांड्स आने चाहिए, बट अब आपके पास अगर गिटहब डेस्कटॉप है तो आप इस कमांड्स को नहीं भी यूज करोगे तो भी यू कैन वर्क. ओके सो लेट मी स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट 2. अब मैं एक प्रोजेक्ट 2 बनाऊंगा, not using command line, using GitHub desktop. Okay, create a new repository. इसका मैं नाम देता हूं GitHub project. इन केस अगर सेमिनार थोड़ा लंबा हो जाता है तो प्लीज होल्ड कर लेना. दिस इज ऑल गुड फॉर बेटरमेंट. अगर आपका खुद का, आपको मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज होंगी. ओके आई हैव टू मेक अ न्यू फोल्डर GitHub project 2. ओके सिलेक्ट फोल्डर. ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर दिया एक न्यू डायरेक्टरी बना के. ओके nothing, no need to add all this. Create repository. ये हम विदाउट कमांड लाइन गिटहब यूज करने का प्रोसेस सीख रहे हैं. it inserted it up over here. Okay GitHub project 2 के अंदर एक और GitHub project 2 आ गया. सी एज यू ऑल कैन सी, मैंने एक न्यू फोल्डर किया GitHub project 2, उसके अंदर एक और GitHub project 2 नाम का फोल्डर आ गया है. सो टू कम आउट ऑफ दिस we can either delete this or simply bring the git and the git attributes out of that folder. मैंने यहाँ ले लिया और मेरा ये फोल्डर बन गया GitHub project 2. ओके यहाँ पर फिर से पाथ सेट करना पड़ेगा लोकल. ओके सिलेक्ट फोल्डर. ठीक है ये स्टेप भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक और बार पूरा स्टार्ट टू एंड रिपीट करके दिखाऊंगा, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस अप. सी ये मेरा GitHub project 2 नाम का एक फोल्डर बन गया अब यहाँ पे. ओके दिस इज स्टिल नाउ लोकल बिकॉज GitHub यहाँ खुद बोल रहा है. ओके अब गिट लाइक GitHub के एक हिसाब से, एक फीचर के हिसाब से आ गया है. ओके एंड गिट का सारा काम अब GitHub हैंडल करेगा. ओके सो लेट्स सी दिस ओवर हियर. नॉट I'm still live now. Okay. Here it is saying publish repository. हम अभी पहले publish नहीं करें, हम पहले local पे work करते हैं. New file index.html. This is let's create a HTML page. GitHub project 2. Just simply give a heading. Which one? Hello, this is project 2. Okay see you all can see जैसे ही मैंने वहां फाइल क्रिएट किया एंड लिखा,
अब I don't have to write all the commands as git add, git commit. यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें आ जा रही है. ओके, कमिट में जो हम मैसेज लिखते थे वो यहाँ आ गया. ओके, यहाँ मैं लिखूंगा इनिशियल कमिट एंड आई कमिट टू मेन. ओके, यहाँ ये कमिट हो गया. दिस रिपोजिटरी इज स्टिल नाउ नॉट ऑन माई गिटहब. ये अब तक मेरे गिटहब पे अवेलेबल नहीं है. तो अगर मैं यहाँ आता हूँ, सर्च करता हूँ repositories, lots of work. Okay, before going that over there, this is the space where GitHub shows कि आपने कितना work किया है GitHub पे. Repositories, let's search for one. GitHub. See, there is no project 2. अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ. वहां पर हमें GitHub की रिपोजिटरी को पब्लिश करने के लिए कितना लॉन्ग टाइम कमांड लिखना पड़ रहा था, बट यह हमें सिर्फ लिखना है, क्लिक करना है पब्लिश बटन पे. Either I can keep it private or public, publish. While publishing जो हमारा सेकेंड कमांड था, जिसमें हम ब्रांच क्रिएट कर रहे थे, इट इज रिपोजिटरी पब्लिश ब्रांच. सब इस सॉफ्टवेयर के. Okay, see, project 2 is just over here, updated 29 seconds ago. Okay, initial commit. If you want, I will show you this particular step even once again, but before this, I will simply, if anyone wants, let me know. I'll show this step once again, how to create a repository, not via command line, via GitHub desktop. Okay, so let's come over here. GitHub desktop से भी हमें repository create करने आ गया. Okay, 1 and 2. So हमने यहाँ पे क्या यूज किया था? क्रिएट न्यू रिपोजिटरी कर लिया, ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी कर दिया. अब हमें गिटहब से कोई रिपोजिटरी क्लोन करना है. ओके, इफ आई वांट टू क्लोन एनी रिपोजिटरी फ्रॉम गिटहब, जैसे कि ये मेरी एक रिपोजिटरी है. रिपोजिटरी मींस फोल्डर. हमें कोई भी फोल्डर अगर गिटहब से लेना है. Sir, हाँ, sorry to interrupt. Could you please repeat that repository from desktop? from desktop ना. Okay, let me delete this project 2. Delete. Remove folder from workspace. I have removed. It's just from the workspace. Delete this folder. Okay. अब मुझे यहाँ से भी डिलीट करना होगा मेरे GitHub से. Settings. Delete this repository. Okay. Delete this repository. Now that particular repository has been deleted. GitHub project 2 is nowhere available. Okay. GitHub desktop automatically इसके पास अब वो लोकेशन अवेलेबल नहीं है, so ये रिमूव करने बोलेगा. Okay. Let's come back over here. To create a repository using GitHub desktop, create new repository, GitHub desktop 2. The path which I am going to use, GitHub desktop. Oh no, not over here. Git and GitHub. Select the folder and create repository. So जो हमारा git initialize था कमांड, वो अब लिखने की जरूरत नहीं है. हमें बस यहाँ पर create repository करना है, सारे कमांड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे. सी, ये रिपोजिटरी यहाँ बन गई. अभी तक ये लोकल है क्योंकि ये GitHub पे गई नहीं है. So I'll simply create files over here.
let's be fast. Lots of things are remaining. Okay, add folder to workspace. Okay, so this is my file. Let's create a new file, index.html. जैसे ही मैं यहाँ क्रिएट करूँगा, GitHub को पता चल जाएगा कि एक न्यू फाइल बनी है. ओके, जैसे ही यहाँ पर एक भी लाइन लिखी जाएगी, ओके, everything comes over here in the green. If you want it in a single line, unshift it. ठीक है. Then I'll simply commit this. No need of command line. GitHub desktop में हमारे पास ब्यूटीफुल सा यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है. इधर पर चाहिए तो प्री डिफाइंड क्रिएट इंडेक्स भी आता है. अगर हमें कमिट लिखना है, कमिट टू मेन. ओके, here we get an option of publishing the repository, publish, name of the repository and publish. See, ये पब्लिश भी कर रहा है. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पब्लिश ब्रांच एंड ऑल फ्री. कब तक रुकना, लास्ट में इवन. ओके, इट इज नाउ ऑल डन. ये मेरी रिपोजिटरी गिटहब पे जा चुकी है. इफ आई नाउ कम ओवर हियर एंड सर्च आफ्टर रिफ्रेश, ओके, सी ऑटोमेटिकली इट इज शोइंग मी जस्ट 27 सेकेंड्स अगो एक न्यू रिपोजिटरी मेरी क्रिएट हुई है. ओके, सो ये था हमारा प्रोसेस, रिपोजिटरी यूजिंग गिटहब डेस्कटॉप क्रिएट करना. ओके, अब इन केस अगर मेरा कंप्यूटर शिफ्ट होता है और एल्स आई डायरेक्टली गो, या मेरा सिस्टम डाउन हो चुका है या मैं किसी और के सिस्टम में हूँ, नाउ अब मेरी ये रिपोजिटरीज गिटहब पे है, तो अब मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं. आई सिंपली डिलीट दिस प्रोजेक्ट. डिलीट. Oh, it is open. Delete. Remove from workspace. Try again. टर्मिनल से भी निकालना. अच्छा, try again. Oh, terminal exit. Try this up again. ठीक है. एट योर फ्रेंड्स होम, उनके लैपटॉप में आप अपना सिस्टम ओपन कर रहे हो, और एल्स यू आर यूजिंग सम एल्स लैपटॉप. ओके, या फिर आपका लैपटॉप डिस्ट्रॉय हो चुका है. सो हाउ विल आई ब्रिंग माई कोड बैक? आई विल सिंपली गो इन द गिटहब डेस्कटॉप. मैंने आपको जितना कमांड लाइन से यूज था वो सब बता दिया है. अब जो भी हमारा इजीनेस रहेगी वो गिटहब डेस्कटॉप से रहेगी. So I want this to be simple and easy for everyone. Okay. GitHub को ऑटोमेटिकली पता चल गया ये रिपोजिटरी डिलीट हो चुकी है. See, यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 है, but it has been can't find by GitHub. So अब मुझे इसे GitHub के सर्वर से मेरे लोकल कंप्यूटर पे कैसे लेकर आना है, मैं आपको वो बताऊंगा. ओके, तो ये है GitHub प्रोजेक्ट 1 जो कि अब नहीं रहा, एंड यहाँ पर मेरे गिटहब के पास अवेलेबल है वो. सो अब रिपोजिटरी क्लोन कैसे करते हैं? सो क्लोन करने के लिए यहाँ पर गिटहब ने बोला है ये यूआरएल यूज करो, बट एज बीइंग अ स्टूडेंट आप सबको इजी स्टेप फॉलो करना है जो आपको थ्रू आउट द लाइफ इजी हो काम आएगा. आई सिंपली क्लोन द रिपोजिटरी. क्लिक ऑन द क्लोन. क्लोन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. क्लोन फ्रॉम गिटहब, एंटरप्राइज सर्वर एंड द यूआरएल. अगर मैं ये यूआरएल लिखता हूँ, ओके, तो मैं यहाँ से भी क्लोन कर सकता हूँ. ओके, बट ये मेरी ही रिपोजिटरी है तो मेरी रिपोजिटरी लिस्ट में ये आएगा. ओके, व्हाट वाज द नेम? गिटहब प्रोजेक्ट 1. अब मेरे ये लैपटॉप के अंदर प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं था, बट मैंने क्लोन पे क्लिक किया. ओके, दिस इज ऑसम. गिटहब डेस्कटॉप से आ गया है सी.
आई डिलीटेड दिस रिपोजिटरी, नाउ इट इज बैक, अब ये रिटर्न आ चुकी है, ठीक है। ये तो मैं इसी तरीके से प्रोजेक्ट 2 को भी क्लोन करता हूँ, जैसे कि अभी ये मेरा प्रोजेक्ट 2 भी था यहाँ पे, ओके, फाइल ऐड, हमने ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी देखा, जो लोकल रिपोजिटरी रहती है उसे हमें ऐड एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी करना है। न्यू रिपोजिटरी, अगर आप प्रोजेक्ट न्यू से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको न्यू रिपोजिटरी करना है। क्लोन रिपोजिटरी, अगर आप गिटहब के सर्वर से रिपोजिटरी लाना चाहते हो तो क्लोन रिपोजिटरी, यहाँ पर अभी मैंने अपने इससे क्लोन किया था, यहाँ नाम डाल के फ्रॉम माई रिपोजिटरी, वी कैन ऑल्सो क्लोन इट फ्रॉम द URL, कॉपी पेस्ट द URL। दोनों भी ऑप्शंस में प्रोजेक्ट 2 गिटहब, मुझे प्रोजेक्ट 2 क्लोन करना है। I simply copied its URL, pasted it over here। दोनों भी ऑप्शन के अंदर एक फील्ड कॉमन है, लोकल पाथ एंड लोकल पाथ। लोकल पाथ जो मेरा रहेगा वहां पर ये रिपोजिटरी क्लोन होगी, क्लोन। सी, ये यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। मीन्स अगर आप गिटहब यूज करते हो, सो wherever you are, you can get your project in your laptop। आपका जितना भी कोड है वो लाइफ टाइम प्रिजर्व रहेगा, दिस इज द वर्ड्स ऑफ गिटहब, अगर उनके सर्वर पे है तो, ओके। नाउ अभी तक तो हमने सिर्फ देखा कि गिटहब कैसे स्टोर करता है, ओके, हमारे कोड को स्टोर करता है, बट अब गिटहब और गिट और क्या क्या करता है, ओके। ऑल द मैजिक of controlling the lines of code is by Git and storing the code is handled by GitHub। मतलब Git हमारी लाइंस कंट्रोल करता है और GitHub हमारा कोड कंट्रोल करता है। सो द प्रोजेक्ट 1 where I was working, मैं उसे यहाँ पर फिर से लेकर आता हूँ, प्रोजेक्ट 1, कॉपी, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस। अब ये है मेरा इंडेक्स पेज, ओके। राइट नाउ मैंने इस प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर वर्क किया था, अब मुझे इसके अंदर और लाइंस एडिट करनी है, जैसे कि गेट हब प्रोजेक्ट 1, मैंने ये नेविगेशन बार के अंदर टाइटल डाल दिया। लेट मी ओपन दिस कोड अप बैक ओवर हियर, सी यहाँ टाइटल आ गया, ओके। देन in the jumbotron text we'll write, let's become expert in Git and GitHub, ओके। ये मेरा jumbotron में टेक्स्ट भी आ गया, लुकिंग ऑल टुगेदर, ओके। तो यहाँ मेरा ये कोड, लाइक यू कैन सी आई एम क्रिएटिंग अ वेबसाइट, बट यहाँ गिट का रोल क्या है। सो बाय द टाइम आई एम क्रिएटिंग माई वेबसाइट, गिट इज डूइंग इट्स वर्क। जैसे अगर अभी मैं यहाँ गिटहब डेस्कटॉप ओपन करता हूँ और मेरे इस रिपोजिटरी के अंदर जाता हूँ, प्रोजेक्ट 1, सी यू ऑल कैन सी, आई जूम इन, लाइन नंबर 17 पे नेविगेशन बार हटा के प्रोजेक्ट 1 लिखा गया है, ओके। लाइन नंबर 43 पे से गिटहब हटा के, जंबो हेडिंग हटा के गिटहब लिखा गया है। सो आई रोट दिस, आई विल कमिट दिस, इसके अंदर लंबा सा कमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं, कमिट टू मेन push origin and no need of writing any command to push in the command line, simply on the button clicks। अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो वो भी गिटहब के अंदर एक्सपर्ट हो सकता है। ये मेरा सारा कोड आ गया, अब मैं इसे चेक कैसे करूंगा, आई विल रिफ्रेश माय पेज, simply come on my page, GitHub project 1, ओके। यहाँ पर you all can see इधर पर 2 commits लिखा हुआ है 24 seconds ago, ओके। मैं इस पे क्लिक करूंगा, 2 commits, इंडेक्स पेज में चेंज हुआ है और इनिशियलाइज पेज में चेंज हुआ है। इंडेक्स पेज में क्या चेंज हुआ है ये गिटहब हमें बताता है, गिट इतना अच्छे से नहीं बताता है। गिट
ये सब चीजें गिट कंट्रोल कर रहा है. यू कैन सी दिस ओवर हियर @14 एंड 17 कितने कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं. ओके, दीज ऑल आर द टेक्नोलॉजीज ऑफ गिट. लेकिन उसे अच्छी सर्विस कौन दे रहा है? गिटहब दे रहा है. ठीक है. सो आई चेंज दिस कोड. इफ यू वांट लेट्स सी, लेट मी चेंज. ओके, यहाँ पर मैंने कोड को चेंज किया है. इट्स कम बैक ओवर हियर. दिस थिंग डन ओवर हियर. किसी को ये सारे स्टेप्स फिर से रिपीटेड चाहिए, सो लेट मी नो. आई विल शो यू वंस अगेन के रिपोजिटरी क्लोन कैसे करना है गिटहब से अगर मेरा पूरा प्रोजेक्ट चले जाता है. वेट, आई विल शो यू वंस अगेन. ओके, बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. हमने लोकल एंड रिमोट रिपोजिटरी तक के देख लिया है एंड इट्स बीन 1 hour. वी आर ऑन द ट्रैक. ओके, हमने गिटहब डेस्कटॉप भी सीख लिया है. Now we will proceed to public and the private repositories. Okay, so before that let me show you once again के प्रोजेक्ट को क्लोन कैसे करना है, because this is the most important step जो सबको आना चाहिए. Okay, ये मेरा कोड है. I'll remove this from over here. Remove folder from workspace. Okay, I will delete my code GitHub project 1. मैंने इस कोड को डिलीट कर दिया. You know, after getting GitHub, I never cares कि मेरा कोड डिलीट हो जाएगा या कुछ होगा. Nothing to care. Okay, then GitHub को भी डेस्कटॉप को भी पता चल गया कि कोड जा चुका है. Okay, how to clone it? Simply come at your code GitHub project 1. Okay, or just simply turn on your GitHub desktop. ये आपका ही कोड है. यहाँ पर आना है, ऐड पे क्लिक करना है, क्लोन रिपोजिटरी GitHub project 1 and clone. लेगा, but this is the most simple step for any developer or any team member. एक रिपोजिटरी को क्लोन करना, लेकर आना. एंड ये फिर से मेरे लोकल कंप्यूटर पे आ गई है. सी, मेरा सारा कोड वैसा के वैसा ही है. अगर मैं इसे और अच्छे से देखना चाहूँ, आई विल ब्रिंग इट अप टू माय टेक्स्ट एडिटर, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस. एज बीइंग अ फुल स्टैक डेवलपर आपको ही आपके कोड की सारी सिक्योरिटी, हैंडलिंग, यूआई डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग सब खुद ही करना पड़ता है. ओके, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट आपको इतना हैंडल करना. बट जब आपके पास टीम आ जाती है तो किसने क्या किया है वो आपको ब्रांचेस बना के क्रिएट करना पड़ता है. सो वी विल प्रोसीड इवन फर्दर फॉर दैट. ओके, सो यू ऑल कैन सी मेरा पूरा कोड आ गया. इनफैक्ट सिर्फ कोड ही नहीं, मैंने क्या चेंजेस किया है वो भी आ गया. ओके, so GitHub keeps track of everything. so यहाँ तक के अब तक हमने सीखा है कि Git क्या है. Git is just a software जो हमें each and every लाइन का ट्रैकिंग देता है. ओके, जैसा कि यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि कौन से लाइन में क्या चेंजेस हुआ है, ये हमारा Git हैंडल करता है. ओके, इसके कुछ कमांड्स यहाँ अवेलेबल है. If you want, I'll share this up in the WhatsApp group or on the description sections. ये सब commands है Git के. Okay, but these are for the command lines. जब आपके पास command line है तब आपको ये commands की जरूरत है. अगर आपके पास GitHub desktop है, okay, so आप इसे नहीं भी यूज करेंगे तो भी आपका सारा काम पूरा हो जाएगा. As being an expert, आपको ये सारे commands अच्छे से आने चाहिए. Okay, ठीक है. देन Git एक हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमें लाइन बाय लाइन ट्रैकिंग देता है कोड की. GitHub एक सर्विस है जो ये सारे Git को, ऑल दिस Git, जो ये सारे Git कंट्रोल्स को स्टोर करता है. ओके, ठीक है. मैं आपको Git के बारे में और बताता हूँ, फिर हम Git का टोटल चैप्टर क्लोज कर देंगे.
Git is having branching and merging, मतलब ब्रांच क्रिएट करना, मर्ज करना. ओके, then this is the speed जो Git ने बताया है using the according to as compared to SVM. Okay, few of the flows of Git subversion style, एक shared repository, multiple developers. यहाँ भी हम जाने वाले हैं. इंटीग्रेशन मैनेजमेंट फ्लो, एक ही मैनेजर होगा एंड पब्लिक एंड प्राइवेट डेवलपर्स होंगे. लेट मी कम लेटर ऑन टू दिस. बिफोर दैट, विजुअल चीट शीट गिट की. ओके, जैसा कि मैंने कहा था कि गिट के अंदर मल्टीपल एरियाज होते हैं, स्टैश, वर्क स्पेस, इंडेक्स एंड द लोकल. ये आप खुद से जाके विजिट करोगे तो आपको बेटर रहेगा. मैं इसकी लोकेशन बता देता हूँ. आफ्टर दिस वीडियो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज दिस. ये हमारे गिट में डॉक्यूमेंटेशन में विजुअल चीट शीट अवेलेबल है. और वो जो दूसरी थी, दिस वन, ये आपको ये वाली अवेलेबल है. ओके, सो लेट्स सी द विजुअल चीट शीट. दिस इज द स्टैश. यहां से पुश, पॉप, अप्लाई, स्टैश लिस्ट, शो स्टैश, ये सब चीजें शो होती है. दिस इज जस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन. फिर हम गिट का चैप्टर क्लोज करेंगे. वी विल ओनली फोकस ऑन गिटहब. ओके, देन दिस इज द वर्क स्पेस. अब आपको ये सारे कमांड्स थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं. जैसे दिस इज द स्टेटस. ओके, यहाँ आपको एरो शो हो रहे होंगे, जैसे कि दिस कमांड ब्रिंग्स डेटा फ्रॉम इंडेक्स टू स्टैश. दिस पुट्स, ये स्टैश से पॉप करता है, इंडेक्स में लेके जाता है, ये स्टैश में अप्लाई करता है. यहाँ सिर्फ लिस्ट होता है, ये स्टैश से पर्टिकुलर ब्रांच तक लेके जाते हैं कोड को. देन वर्क स्पेस, स्टेटस, डिफ शो करता है कौन सी फाइल चेंजेस हुई है. ओके, ऐड आपको समझ ही आ गया होगा, एक एक लाइन बाय लाइन, सॉरी, एक पर्टिकुलर फाइल्स को ऐड करता है और लाइन बाय लाइन ट्रैक करता है कि मॉडिफाई हुई है. ओके, रिमूव करता है, मूव, कमिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड, रीसेट, स्विच ब्रांच, यहाँ भी हम जाएंगे, मर्ज, कमिट, रीबेस, चेरी पिक, रिवर्ट, क्लोन. सो ये सब आपको एरोज देख के समझना है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, चेकआउट इंडेक्स से वर्क स्पेस में लाता है, देन रीसेट, देन कमिट, लोकल रिपोजिटरी तक लेके जाता है. यहाँ क्लोन एंड पुल कमांड्स हमें अपस्ट्रीम से कोड यहाँ ला के देते हैं. ओके, क्लोन एंड पुल. और क्लीन जो कमांड है वो रिटर्न स्टैश में लेके जाते हैं. ये एरोज को बस like I'm just explaining you the arrows, rest of the work you can do. See, here you can see this command is same. ये वही कमांड रिटर्न रिपीट हो रहा है क्योंकि ऐड कमांड हमारे इंडेक्स में लेकर आता है, rm, मूव, चेकआउट. इंडेक्स में भी रीसेट, हार्ड, डिफरेंशिएट, ये पुश, पॉप, ये ऑलरेडी स्टैश में अवेलेबल थे, पुश पॉप्स. ओके, लेट्स कम बैक टू इंडेक्स. कमिट, मैसेज, ये जो हमारे कमांड्स है कमिट एंड अमेंड, कमिट, अमेंड, ये लोकल रिपोजिटरी तक के लेके जाता है कोड को. ओके, लोकल रिपोजिटरी, ये वही ऊपर के रिपीटेड कमांड है वर्क स्पेस के, ये रिटर्न वर्क स्पेस में लेके जाते हैं कोड को. देन यहाँ पर हमारे पास कमांड है लोकल, डिफ, ब्रांच, देन ब्रांच ट्रैक, देन फेच. अब यहाँ लोकल से अपस्ट्रीम, यहाँ रिमोट को नाम दिया है अपस्ट्रीम, लोकल से अपस्ट्रीम, पुश, रिमोट ऑन पर्टिकुलर ब्रांच. ओके, सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स. हम इसके ऊपर लास्ट में एक बार फिर से आएंगे. जैसे अब यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. नाउ लेट्स assume that you all have got a complete or a basic knowledge of what actually git is. Okay, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है हर एक पर्टिकुलर कमांड. अब हमें डील करना है GitHub से. Git is now completely understandable by everyone. सबको समझ में आ गया है कि ये हमारा Git क्या है. This is just a software to provide the version control or the line by line tracking of each and every file. हर एक फाइल का लाइन बाय लाइन ट्रैकिंग देता है. लेट्स गेट ऑन टू द GitHub. लेट्स बिकम एक्सपर्ट टुगेदर. ओके, लेट्स कम बैक टू GitHub. ओके,
Our next topic was local repository, remote repository. You all might have gone expert अगर आप अच्छे से सुन रहे होगे क्या होता है. Then public and private repository. Now what this actually is. We don't want कि हमारा कोड हर किसी को शो हो अगर वो कॉन्फिडेंशियल हो या वो आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हो, ओके, या फिर वो आपका एक पर्सनल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो. सो हियर यू कैन सी मेरी 39 रिपोजिटरीज है, बट इफ आई ओपन दिस इन incognito and open GitHub and I simply search for my name. It's a nice query. All your names are like over this. See, from over here, users. One user. See. Here, यहाँ पर आपको सिर्फ 15 रिपोजिटरीज शो हो रही है मेरी, ओके. तो दीज आर दी 15 रिपोजिटरीज जो मैंने पब्लिक में रखा है क्योंकि उसकी पर्टिकुलर नीड थी पब्लिक में रखने की, और दूसरी रिपोजिटरीज जो प्राइवेट में रखा है वो प्राइवेट में रखने की नीड थी, लाइक दिस वन ओपन मार्केट, ओके, प्रोजेक्ट्स, ओके. सो इसका यहाँ पर कोड अवेलेबल है ऑल द वे ऑन, एवरी कोड अवेलेबल. यू कैन ऑल्सो क्लोन दिस डाउन इफ यू नीड, ओके. इश्यूज, एक्शंस. नाउ वी विल कम पार्ट बाय पार्ट टू ऑल दिस स्टफ. अगर मैं इसके इनसाइट्स में जाता हूँ बहुत सारी चीजें, लेट्स कम स्टेप बाय स्टेप, बट दिस माइट हैव मेड अ पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर फॉर यू. रिपोजिटरीज प्राइवेट में अलग होती है, पब्लिक में अलग होती है. सो जो मेरी प्राइवेट रिपोजिटरीज है, जैसे कि अगर देखा जाए तो लेट्स कम ऑन टू दिस वन. Here it will directly show as a private repository, okay. Let's come on to this one, my first React, okay. This repository is private. अगर मैं यहाँ आता हूँ, सर्च करता हूँ रिपोजिटरी लिस्ट में my first React, you will not get to see this repository, okay. But अगर मैं इसकी settings में जाता हूँ, settings is the most important part in the GitHub. If I go over here in settings, okay, change visibility of this repository. यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कमांड्स है, अब तक के तो हम इसे फ्रीली यूज करते आ रहे थे, बट दिस इज द डेंजर जोन, ओके. एज आई क्लिक ऑन द चेंज विजिबिलिटी, इट विल आस्क मी टू मेक माई रिपोजिटरी पब्लिक. जब मैं इसे पब्लिक करता हूँ तो ये सबको शो होगी, ओके. सो हियर आई हैव टू राइट डाउन मेक एज पब्लिक, चेंज, ओके. सो नाउ माई दिस रिपोजिटरी इज पब्लिक एंड यहाँ से प्राइवेट का टैग हट गया है, ओके. लेट्स सी दिस ओवर हियर, लेट्स refresh this, my first React. See, ये अब रिपोजिटरी पब्लिक हो चुकी है. आप इसे क्लोन कर सकते हैं, इसके अंदर इश्यूज रख सकते हैं, ओके. फुल अगर आपने कोई इसको क्लोन करने के बाद फोक किया है, फोक करने के बाद अगर आपने इसके अंदर कोई फीचर इंप्लीमेंट अप किया है, तो आप उस उसका पुल रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेरीज है. सो इट विल बी बेटर फॉर मी टू सॉल्व दैट. सो मे बी बाय दिस थिंग्स आपको पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी. तो नाउ लेट्स कम ओवर हियर, ओके. हाउ टू मेक लोकल रिपोजिटरी अ रिमोट रिपोजिटरी. अब ये चीज मैं गिटहब डेस्कटॉप से करके बताऊंगा आप लोग को, ओके. गिटहब डेस्कटॉप से एक पब्लिक रिपोजिटरी, मतलब जो समझ लीजिए, लेट मी ब्रिंग अप माय पर्टिकुलर कोड, एनी ऑफ द कोड documents. Let me pick an Arduino code, okay. I will simply take this Arduino code. It is not necessary कि आप GitHub पे बस खाली GitHub के ही
लाइक HTML या यही सारी चीजें डाल सकते हो आप GitHub के ऊपर, Android, Arduino, each and everything you can link up to GitHub. So now this project I have created, I want to, this is already a Git repository. Create this. Let's take some different one. Documents. Let's make it a Git repository over here and directly upload this code onto GitHub. So now see what I'm going to do. मेरे सिस्टम में अगर GitHub desktop installed है, so there is no need of installing git bash once again. तो ओपन करने का ऑप्शन आता है, else if I write cmd directly over here, तो यहाँ ये फोल्डर cmd में खुल जाएगा. If you want to see, ये फोल्डर मुझे cmd में ओपन करना है. कम ठीक है. आई एम हैविंग गिट इंस्टॉल, सिर्फ गिट लिख के देखो, पता चल जाएगा आपके पास गिट अवेलेबल है कि नहीं. इस रिपोजिटरी को मुझे रिमोट पे लेके जाना है, मतलब मींस ये जो मेरा गिटहब है, माय रिपोजिटरीज ओवर हियर, 40 रिपोजिटरीज होना चाहिए और मुझे शो होना चाहिए दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ओके, नाउ सी आई pretty go slow in this step, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों के प्रोजेक्ट्स रिटर्न गिटहब के ऊपर जाने वाले हैं. ओके, तो आई विल कम ओवर हियर. मैंने इसे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन किया है. क्लियर स्क्रीन. कमांड प्रॉम्प्ट में हमें सिर्फ लिखना है गिट इनिशियलाइज. इससे ये रिपोजिटरी एक गिट रिपोजिटरी बन जाएगी. अगर चाहिए तो चेक कर सकते हैं गिट स्टेटस से. ओके, see, if you don't know any of the command git, add, commit and everything, cancel this, come over here to GitHub desktop, यहाँ पे क्लिक करो, add पे क्लिक करो, add existing repository. So, हाँ, sorry to interrupt, but can you explain what is stash, workspace, and index again? yes, I will explain. I'll come back to that in later on because it is having some need, क्योंकि अभी हमारा branches and all बाकी. I'll come back to that. Okay, I'll keep this in mind. Okay, so where were we? मुझे मेरा ये लोकल आर्डिनो का कोड जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, शायद मुझे इसे मेरे गिटहब पे लेके जाना है. I simply write it git initialize in this folder. Let's delete this once again. Add existing repository. Select the path. Okay, I'll select this folder. मैंने ये folder select किया. See, ये मेरा यहाँ पर पूरा कोड आ गया. Okay, there is no issue for this file. Write the commit in this section and commit the code. अब ये कोड बन गया है एक लाइक हमें ऐड एंड ऑल नहीं लिखना पड़ा, बट अब तक के ये बना नहीं है एक गिटहब का रिपोजिटरी. सो जस्ट क्लिक हियर ऑन पब्लिश रिपोजिटरी. इफ आई वांट टू कीप दिस कोड प्राइवेट, आई विल कीप दिस पब्लिक. पब्लिश. इट इज पब्लिशिंग. जो भी कमांड्स थे हमें कमांड लाइन में लिखने थे, उन सब में से अभी किसी की भी जरूरत नहीं. ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस. सी, यहाँ पर अब 40 रिपोजिटरीज हो गई है. एंड जस्ट 10 सेकेंड अगो आई गॉट दिस माई कोड अप ओवर हियर एट गिटहब. मतलब आपके जो भी इंपॉर्टेंट कोड्स एंड दिस इज ऑल्सो प्राइवेट पब्लिक.
अभी अगर मैं इसे प्राइवेट करता हूँ तो आप आपके सिस्टम से इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं. ओके, जैसे कि आई विल मेक दिस प्राइवेट, मेक प्राइवेट, because everyone needs confidentiality of their code. अब जितना भी ट्राई कर लो, this code is not going to be visible in my git repositories. ये अभी अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर देखना चाहूँ सो दिस इज माई कोड. अगर मैं इसमें कोई भी लाइन में चेंज करता हूँ, ओके, सो वो भी मेरा ट्रैक होगा. Here we have seen how to make local repository या remote repository. जो आपका कोड था वो आपको GitHub तक के कैसे लेके जाना है. ठीक है, we will come back to all those stash index. Let's first okay, now this is the collaboration of team. जैसे कि अगर मेरी repository local है, okay, so I can simply clone it up, या मेरा कोई भी फ्रेंड उसे क्लोन कर सकता है या फोक कर सकता है और उसमें चेंजेस करके मुझे मेरे पास भेज सकता है, मुझे मिल जाएगा वो कोड via pull request. But now my this repository is private. This one, where is that GitHub? Now my this repository is private. Okay, so अब मुझे इसके अंदर कोलैबोरेशन करना है तो इट्स pretty difficult. जैसे अगर आप कोई टीम में वर्क करो तो आप नहीं चाहोगे कि आपके फ्रेंड्स को पता चले कि आपका कोड क्या चल रहा है. ओके, या आपकी अनदर कंपनीज को पता चले. सो GitHub ने उसके लिए अवेलेबिलिटी दिया है in this setting. Okay, there was a call. So where were we? We were over here कि हमें हमारे फ्रेंड्स को मैनेज एक्सेस कैसे देना है, मतलब उन्हें एक्सेस कैसे देना है हमारे कोड के ऊपर. ओके, see over here in the options of GitHub, here there is an option for manage access. Who has access, वो आपकी प्राइवेट रिपोजिटरी यही वाली देख सकता है जिसके आपने एक्सेस दिए. So I'll simply click over here and I'll search for my friend. No friend over here. Okay. So here what you just have to do, let's take anyone as my friend. Let's search for another Danish. Invite collaborator. Okay, add collaborator to this repository. Now you might be thinking I've sent my request to anyone, any unknown person, but it will give a mail to that person. ये वो person के पास mail जाएगा and तब तक ये request pending रहेगी. If I want to revoke the access from my friends, मुझे सिर्फ यहाँ delete पे click करना है and this will cancel the access or delete the allocated access. ये जो settings का पेज है, this is the like heart of your GitHub repository. Okay, so ये सिर्फ उसी के पास रहता है who is the owner. As you all can see, here it shows owner of this repository. Okay, so यहाँ पर अगर हमारे पास multiple owners रहते हैं तो वो multiple शो होगा. I can't show you the code of my few other repositories. So हमें अगर owner का नाम लिखना होगा. Here we have seen how to gitignore. जैसे if let's come over here about, let's come back to our GitHub project 1. GitHub project 1. Okay, I came over here
यहाँ पर मेरा index.html है. अब मैं एक न्यू फाइल और क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मेरे कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टोर होगा, जैसे config.json. इसके अंदर इफ आई एम क्रिएटिंग माई MySQL and username, then password. So if you are thinking your repository is public, but अगर ये सारी चीजें भी किसी पर्सन से अगर हिडन है, तो योर रिपोजिटरी अगर वो क्लोन भी होती है तो वो उसके अंदर कुछ कर नहीं सकता. ओके, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट द सिंटैक्स ओवर हियर इज. db name. ठीक है, ये मेरा एक रिपोजिटरी हो गया. ये रिपोजिटरी के अंदर एक फोल्डर हो गया config.json फाइल. ओके, लेट्स नेम दिस एज root, password pass 123. I never keep this password. Localhost and db name system db. Okay, so these are the variables of which I will be using in my system to connect it up. But this is not a lecture of MySQL, but this is a confidential information जो हमारी GitHub तक नहीं जानी चाहिए. But as I open GitHub over here, oh, it is saying to add this file or commit this file. अगर नहीं भी तो यहाँ मैं इंडेक्स पेज के अंदर कुछ करता हूँ. ओके, अबाउट. ओके, अगर मैं यहाँ इंडेक्स पेज में कुछ चेंज करता हूँ तो दोनों फाइल्स एड अप हो जाएगी. अगर मैं इसे निकालता हूँ तो आई हैव टू रिमूव दिस अगेन एंड अगेन एवरी टाइम. सो यहाँ पर कंसेप्ट आता है गेट इग्नोर का. ओके, so to simply avoid your files to go on GitHub or just to stay in your system, add a file name as, not over up there, add a file named as dot get gnore. I say you all take a break for 5 to 10 minutes. I'll be continuing up within few minutes. Okay. Yes, sir. All the participants, we will be taking a break for 5 minutes. Please be back on time after 5 minutes. Thank you.
Okay, let's continue back over here. So we were at the option of git ignore. जैसे हमारा अगर confidential details है वो GitHub तक नहीं जाना चाहिए. So ये जो GitHub ने हमें cheat sheet दिया है इसे अच्छे से आप याद रख सकते हैं. Okay, इसके अंदर कुछ पैटर्न्स दिया हुआ है. Okay, जैसे पर्टिकुलर मैं डायरेक्टली फाइल का नेम लिख सकता हूँ या डॉट फाइल का एक्सटेंशन. सो यहाँ पर मुझे अगर इग्नोर करना है विच फाइल, config.json. ओके, सो जैसे ही मैं इधर गिटहब में आता हूँ वो फाइल हट जाएगी एंड गिट इग्नोर आ जाएगी. ओके, गिट इग्नोर के अंदर एक न्यू लाइन इंसर्टेड है. आई मेक अ मिस्टेक इन द स्पेलिंग. दिस फाइल कम्स बैक ओवर हियर. अगर मुझे सारी जेसन फाइल्स रिमूव करना है तो सिंपली राइट स्टार जेसन, इससे सारी जेसन फाइल निकल जाएगी. ओके, अगर मैं लिखता हूँ सिर्फ config.star, लाइक बेसिक लिनक्स प्रोसेस. ओके, it will also remove this. If I just write config star shell. So let's be proper. Config.html, config.json. Okay, now as I commit my code, included git ignore for config. For for config, because this config is going to be shown. Commit to main. Push push the code. This code is being, while this is pushing, let it push up. Hang on. Okay, so now this code is all the way up online. Let's come over here, refresh this page. ये पेज को हम रिफ्रेश करते हैं. यहाँ आपको हिस्ट्री में सब शो होगा. आफ्टर दिस आई विल कम प्रीटी close to few of the biggest repositories that I have created. Okay, okay, see, यहाँ लास्ट कमिट है इंक्लूडेड गिट इग्नोर. ओके, सिर्फ ये यहाँ पर गिट इग्नोर लिखा हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पर 3 ही फाइल्स आ रही है. ओके, जस्ट 3 फाइल्स ओवर हियर, जबकि हमारे कोड बेस के अंदर 4 फाइल्स है. तो config.json अब हो जाता है इग्नोर. सो दिस इज व्हाट वी डू व्हेन वी हैव टू मेक अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. और हमारा ऑटो डिप्लॉयमेंट हमें करना है गिटहब एक्शन या वर्कफ्लो से, लेकिन हमें उस टाइम पे फिर पब्लिक रिपोजिटरी रखनी पड़ती है. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर कोड यूजिंग गिटहब एंड गिट हमें ये फैसिलिटी भी देता है कि जो कोड नहीं पुश करना है वो मत करो, उधर जाकर मैन्युअली क्रिएट कर दो जहां आपका सर्वर पे कोड अवेलेबल है. ओके, okay, now what we have to do. Okay, this is all done. Till now we have seen a lots of stuff, but Sorry to interrupt, हम sir. एक but- ही लाइन में वर्क कर रहे हैं. Sorry to interrupt. Could you please zoom? हाँ, yes, So could you please zoom in? हाँ, I'll zoom. हाँ, there is no important concept over here, so okay, see, let's zoom it over once again. Till now we have seen a long journey of GitHub. यहाँ पर by my side, whoever are seeing all this might have got their myth cleared of कि Git अलग है, GitHub अलग है. हाँ, ये सबको पता चल चुका होगा कि GitHub सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब जैसे कि मैं यहाँ Git यूज कर रहा हूँ and we have named our seminar as Git and version control. Git के साथ हम दूसरी भी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है GitHub है वर्सेस
Bitbucket versus GitLab. These three are three different servers for storing Git. Let's come over here at Bitbucket. I am also having my account over here. Okay, let's log in with Google. So मैंने अपनी रिपोजिटरीज को Bitbucket से भी लिंक करके रखा है because it helps me sometimes for the hosting. Okay, you all can see up over here my repositories. Okay, see, these are the few of the repositories which I have linked with Git. If I want, I can insert even more repositories over here. Okay, so let's cancel this. अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि GitHub अगर नहीं भी रहता है तो भी Git की वैल्यू है. ओके, Git हम कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ भी यूज कर सकते हैं, बट अगर Git नहीं है तो देयर इज नो GitHub, नो Bitbucket, नो GitLab. So GitHub is all the way based on Git. Git है तो GitHub है. Okay. Now we have to come here on the branches. Okay. तो ब्रांचेस क्या होती है? अब जैसे कि हमारा ये जो मास्टर है GitHub के अंदर, जैसे जो हमारी ये मेन ब्रांच है, सी मेन ब्रांच और मास्टर ब्रांच. ओके, ये ऑल टाइम प्रोडक्शन के अंदर रहती है. ठीक है, जैसे यहाँ पर GitHub एक्शंस है. GitHub एक्शंस के अंदर हम एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं जिससे ऑटोमेटिकली कोड पुल हो जाता है. जो भी हमारा कोड अवेलेबल है, जो भी हमने क्रिएट किया है, जैसे ही हम मास्टर ब्रांच पे पुश करते हैं, ओके, दिस कोड इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू अपलोड इट. जैसे कि हम अगर देखते हैं, हमने सुना भी होगा बीच में फेसबुक के कुछ डेवलपर, लाइक देयर वाज अ मेम दैट वन ऑफ द फेसबुक डेवलपर्स माइट हैव कमिटेड some error in the system, a new developer, but it doesn't happen. But यहाँ पर ऐसा है कि जो मास्टर ब्रांच है वो ऑल टाइम प्रोडक्शन में रहती है, सो उसमें डायरेक्टली चेंजेस नहीं करते हैं. जैसे कि लेट्स थिंक ये जो हमारा कोड है, ओके, दिस वन about.html, ये इस वक्त प्रोडक्शन के अंदर है. लाइक दिस वेबसाइट इज विजिबल ऑल ओवर द ग्लोब. लेट मी ओपन दिस अप. Open in live server. Open Rebase Explorer. ओके, ये हमारा कोड इस वक्त लाइव सर्वर पे अवेलेबल है एंड आई हैव टू मेक फ्यू ऑफ द चेंजेस. जैसे मुझे इसके अंदर इमेजेस एंड ऑल इंपोर्ट करना है. ओके, सो अब जैसे इसके अंदर मुझे और लाइंस लिखनी है. लेट्स क्रिएट अ कार्ड, मोर कार्ड्स. ओके, index.html, Ctrl J. ओके, I'm copying this back up and down. जैसे आपका कोई कोड चल रहा है and you don't want to mess it up. See, यहाँ पर एक मैस हो जाता है, हाँ, but when we come over here, ये सारे चेंजेस गिट के अंदर अवेलेबल है. ओके, इस पर्टिकुलर इस लाइन पे. सो बिफोर कमिटिंग दिस अप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा करंट ब्रांचेस. ओके, before making all these changes or committing up all these changes, I'll simply create a new branch and I will make it as FEATURE, feature branch create. अगर मैंने ऑलरेडी चेंजेस कर दिया है तो ये मेरे चेंजेस को भी लेकर आ जाएगा फीचर ब्रांच में. ये एक हो गई फीचर ब्रांच. ये ब्रांच अब तक GitHub पे अवेलेबल नहीं है पब्लिश में. जैसे कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ GitHub slash project. ओके, तो एज दिस प्रोजेक्ट ओपन्स, वहां पर ये पर्टिकुलर कोड अवेलेबल नहीं है मेरे GitHub पे. सो अगर मेरा गिट का मास्टर ब्रांच प्रोडक्शन में है तो ये कोड वहां भी अवेलेबल नहीं होगा. index.html में. ओके, सी यहाँ पर वो रिपीटेड कोड अवेलेबल नहीं है. ओके, दिस पर्टिकुलर मेस. एंड इफ आई कम ओवर हियर, बैक ओवर हियर, यहाँ भी हमें एक ऑप्शन है ब्रांचेस का. यहाँ भी कोई ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है. मैं सिंपल से यहाँ आता हूँ
I'll publish a branch. ओके, सो यहाँ ये मेरी ब्रांच क्रिएट हो गई. अगर मैं गिटहब पे जाता हूँ, यहाँ मुझे मेरी फीचर वाली ब्रांच शो होगी, बट इसके अंदर भी कोड सेम है क्योंकि हमने अब तक कमिट नहीं किया है. जैसे ही मैं कमिट करता हूँ, मल्टीपल कार्ड्स कमिट, एंड ब्रांच पे नहीं है तो आप इसे पुश कर दो, ये फीचर हो जाएगा कि जो रिपोजिटरी का ओनर है ओके. जैसे कि जो मैंने बताया था, मे बी कैन टेक दिस इन सम अदर सेशन. ओके, माय नेट कनेक्शन इज स्लो. ओके, हाँ, नेट कनेक्शन इज परफेक्ट. पुश टू ओरिजिन, दिस रिक्वायर्स इंटरनेट. यहाँ इंटरनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई एम डूइंग अ सेशन. हाँ, सी, this is now all the way pushed in the feature branch. Okay, let's open our GitHub, come back to our code, branches. Here, this is the main branch. इसके index.html में there will be no code available over here of those multiple cards. Okay, but जब हम यहाँ आते हैं to see our multiple branches up over here and we click on the feature. तो जैसे ही हम यहाँ फीचर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर कोड यहाँ शो हो जाएगा. सी, यू ऑल कैन सी देयर आर मल्टीपल कार्ड्स अप ओवर. ये हमारे मेन कोड में अवेलेबल नहीं है. ओके, दिस इज ओनली अवेलेबल इन दिस फीचर ब्रांच. जैसे कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ये अवेलेबल है. जैसे ही मैं यहाँ से ब्रांच स्विच करता हूँ, एज अ स्विच टू मेन, ओके, दिस ऑल इज गोइंग टू बी डिसअपियर. सब गायब हो जाता है. मेन के अंदर हमें, मास्टर के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है. वी हैव टू वर्क ऑन द फीचर. ओके, फीचर ब्रांच में अब मिलेगा. आई कांट guarantee you that you're going to become expert in just one video unless and until you won't try and then get success. So यहाँ पर ये मैंने feature branch create किया and I create a pull request. Now you all just make a watch and see. जैसे ही मैंने pull request किया, इसने मुझे GitHub के open pull request के section में लेकर आ गया and यहाँ पर request बनी है merge the feature into the main, और फीचर का नाम है इंसर्ट मल्टीपल कार्ड. ओके, ये रिक्वेस्ट मैंने ही जनरेट किया है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है अच्छे से कि किसने जनरेट किया है, बट जो जनरेट करता है उनका नाम आता है. ओके, सो यहाँ मैंने ये रिक्वेस्ट जनरेट किया. अब इट इज शोइंग एज नो कॉन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पर मतलब कोई भी कोड नहीं कर रहा है. ओके, कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक पर्टिकुलर फाइल में 2 लाइन चेंज की गई. दोज आर द एक्सपर्ट लेवल कोर्सेज. दिस इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड गेट स्टार्टेड विद गिटहब. जैसे ही मैं यहाँ मर्ज पे क्लिक करूंगा, ओके, लेट मी कम ओवर हियर एंड शो यू वन मोर ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर, सोर्स ट्री. Okay, so what I have done over here, I have created a new feature branch. मैंने उस feature branch के अंदर changes किया. Okay, and now I have to
टेक दोज चेंजेस टू माय मास्टर ब्रांच। तो उसके लिए मैंने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दिया। अब जो एडमिन है उसे यहाँ पर ऐसा ऑप्शन शो होगा कि दिस इज द पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट बीन क्रिएटेड। ओके, before doing the merge, I'll show you the tree structure, like this type of tree structure. You all can see this is a tree structure of one of my final year project. Okay, so ऐसा पूरा GitHub वर्क करता है, बट GitHub डेस्कटॉप के अंदर ये एक्सेसिबिलिटीज नहीं है. This is available. Let me zoom in. See, it is creating all the branches. ऐसा GitHub branches क्रिएट करते जाता है. अब मेरे इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी को मैं ओपन करता हूँ. I will open my this repository. Open desktop, GitHub. So GitHub desktop ही एक सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमारा काम आसान करता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है. बट to get this you become more master. Okay, so this is like cloning my whole project. Okay, see, I have created two branches over here. One is the feature and another is the origin main. Okay, मैं इसे मर्ज करता हूँ, कमिट मर्ज. जैसे ही हम इसे मर्ज करेंगे ये सारे चेंजेस हमारे मास्टर ब्रांच में आ जाएंगे. Pull request successful. You don't have to take tension about this. You just have to understand how to initialize and create the repository. These are the all the extra works which has to be done by your admin. As I come over here in the code, and जैसे ही हम मेन ब्रांच में आते हैं, इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, सी ये सारा कोड अब यहाँ पर अवेलेबल है. ओके, merging of the branches, how to clone the code. Maybe we have completed everything. I'll show you once again how all the branches have been created over here. Okay, अब यहाँ हम एक और ब्रांच क्रिएट करते हैं, बट फ्रॉम दिस प्रोसेस हम मेन से यहाँ से एक और ब्रांच. ओके, बिफोर दैट, बिफोर लाइक क्लोजिंग ऑल दिस अप, आई विल शो यू वंस अगेन वन मोर थिंग. जैसे कि लाइक दिस वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. ओके, let me open this code in over here. Okay, particular code. So these are all the things available now. This is actually live. If I open this up over here, okay, so this is opening at the local host. This is all opening at the local host. No SSL. I've made a HTTPS redirect. Okay, see, this is the code up over here. Oh, I forgot the password. Let's forget about this. But I want to show you how was the condition of the code in this chart. Okay, so these are all the folders over here. You all can see. Okay, now let's come over here. These are all the efforts made by me in throughout the code. This all has to be done by your admin. See, this is how we have merged all the code by creating updates in our master. You all can see. Okay, let me come down even more down, and let's come over here to the initial commit. Okay, उसके लिए अब प्रीवियस कमिट पे कोड क्या था वो चेक करने के लिए हमारे पास GitHub की तरफ से ऐसा कोई फीचर अवेलेबल नहीं है कि हम डायरेक्ट चले जाए GitHub डेस्कटॉप की तरफ से. सो वी हैव टू
GitHub डेस्कटॉप में ही आपको बताता हूँ. Open the GitHub desktop, particular project. This is not in the master branch. Okay, see. Over here, we are getting some errors. If I go on to some another branch, the code is different. Let's directly go back up over here to this code. Okay. History. All the way down to my initial commit. इस initial commit के अंदर मेरे project directory के अंदर एक भी files available नहीं थी. ठीक है? So to go back over there or to go back at anyone updated login or any of the page, okay, I simply have to copy this particular thing. Let me zoom it up over here. अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है एंड आपको देखना है कि प्रीवियस या टीचर को दिखाना है कि कोड क्या था, यू हैव टू कॉपी दिस अप. ओके, यू कैन डायरेक्टली गो बैक. तो हमें ये पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करना होगा टर्मिनल में. ओके, एंड देयर इज अ कमांड ओवर हियर एज git checkout. Checkout means to just check out. Okay, git checkout. This will bring me up over here, updated login.php. Let's see. Okay, at this time there was no database, but if you see this over here, okay, यहाँ login.php के कोड के अंदर we are having these things. Maybe I've messed up with all of your brains. So I just want to say one thing throughout this session. You all might have learned lots of things, but working with Git and GitHub at initial level is very simple. But as you go down and down and down and down and deep, you have to become expert. Okay. So before that, you have to do lots and lots of practice. So I'll end up my session of all this Git and GitHub over here because it's gonna make lots of. So before all that, all these queries and all, I'll bring a complete summary of complete session. Then we'll have a question and answer. Okay. So over here, we started with Git. Git is a version control system. Git एक सॉफ्टवेयर है जो हमारी लाइन बाय लाइन ट्रैकिंग करता है. आई शोड यू ऑल दिस मेस जस्ट बिकॉज कि आपको एक एक्सपर्ट लेवल की क्लैरिटी हो जाए कि गिट एक्चुअली करता क्या है. इट कैन कम बैक एंड go forward. It can do everything with your code and nothing will be messed throughout the future if you are having some expert with you. Okay, so Git controls your line and each and every page. हमने फिर देखा कि Git को इनिशियलाइज कैसे करना है. Git को हम इनिशियलाइज करते हैं Git इनिशियलाइज कमांड से. Git init, Git स्टेटस चेक करते हैं, फाइल्स ऐड करते हैं कमांड लाइन में. फिर हमारे 3 स्टेजिंग एरियाज होते हैं, वो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. देन फिर हमने लोकल रिपोजिटरी को लेके गए हम गिटहब के ऊपर. ओके, सो गिटहब के ऊपर लेके जाने के लिए हमें कमांड लाइन के यूज में गिटहब ने खुद कमांड दिया है न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक करने पे. तो वहां से हम लेके जाते हैं हमारे रिपोजिटरी को टू द लोकल रिपोजिटरी यूजिंग दिस न्यू. के बाद we saw GitHub Desktop, which is a wonderful accessibility created by Microsoft. GitHub का यूजेज इजी करने के लिए और Git के कमांड्स को इजी करने के लिए. फिर हमने देखा लोकल रिपोजिटरी एंड रिमोट रिपोजिटरी को GitHub तक लेके जाने के लिए कितने सारे प्रोसेस है. We can do lots of things. We can clone it. We can create a new repository. We can take an existing repository. Then, what are the public and private repositories? Okay, public repository वो होती है जो सबके लिए अवेलेबल होती है, and private repositories are the repository जो सिर्फ हमें दिखती है या हमारे कोलैबोरेटर्स को दिखती है. Okay, then let's go with the flow.
Then we did a collaboration request using GitHub. Okay, कि ये आप एक बार ट्राई कर लेना, आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड ऑल को सेंड करके उनके मेल पे नोटिफिकेशन जाएगी एंड वहां से एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद उन्हें भी आपकी रिपोजिटरी इधर GitHub में शो होने लग जाएगी, like this one. As I can see few of the repository of my friends. Okay, इस तरह से आपको उनकी भी रिपोजिटरीज शो होने लग जाएगी. Okay, then we saw the collaboration. Then what is gitignore? जैसे जो भी हमारी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फाइल्स है वो हम gitignore के थ्रू GitHub तक जाने से रोक सकते हैं. ओके, सो वो पब्लिकली किसी को भी शो नहीं होगी, इनफैक्ट प्राइवेटली भी किसी को भी शो नहीं होगी. Then we saw the branches. In production, as we go deep, we can't just commit on the master. हम एक एक फ्रेंड को एक एक ब्रांच बना के दे सकते हैं, आप उसके अंदर वर्क करो एंड हमें दो, एक मास्टर रहेगा वो सारे रिक्वेस्ट को पुल करते रहेगा एंड ही विल चेक कि हमारा जो मेन कोड बेस है वो खराब नहीं हो रहा है. देन वी सॉ हाउ टू ट्रैक द चेंजेस. जैसे हमने प्रीवियस वर्जन में, जैसे हम आपको इधर सोर्स ट्री में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मैंने दिखाया है कि प्रीवियस वर्जन में आपने क्या क्या चेंजेस किया है, आप हर एक चीज GitHub से चेक कर सकते हैं. और यही चीज हमारे GitHub में भी अवेलेबल है, बट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, यहाँ पर ऐसा सिंपली सिर्फ लिस्ट शो होती है एंड पर्टिकुलर लाइंस में क्या क्या चेंजेस हुआ है वो शो होता है. देन हाउ टू मर्ज द ब्रांच. ओके, कि जैसे एक पर्टिकुलर फ्रेंड ने आपके कोई फीचर पे वर्क कर दिया, देन उसे मर्ज कैसे करना है हमें कोड के अंदर. ओके, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया है. ओके, नाउ इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरीज, आप लोग प्लीज पोस्ट करें, और अगर कोई भी नहीं है तो मैं स्टैशिंग का सिर्फ बताता हूँ एंड दैट विल बी लास्ट क्वेरीज. Sir, actually we have queries. हाँ, same. Well, now we move to the next part of our webinar, which is a Q&A session in which all your doubts would be cleared. Sir, I have a couple of questions which are asked by the students watching this live stream. Heading to our very first question, which is there any way to push, pull, clone on GitHub without relying on text commands? Yeah, there is a process to clone clone on the GitHub now. Hello? Yes, sir. Yes, sir. It is the GitHub desktop. Without relying on command, you can directly use the GitHub desktop to clone your repository into your system via these features. Okay, without using any command, you can clone the repository, you can create a new repository, and you can make an existing repository as GitHub repository. Next. Okay, the next question is, I have to remove a file from my Git repository without removing it from my file system. How do you do that? Git repository. So if you want to remove a file from your Git repository without removing from your system, so the explanation is up over here. Just say, see, here you all can see, here there is no file named as config.json. It is removed from Git repository, but it is available up over here in my code base. So using gitignore, you can remove the file from the Git repository without removing from your system. Next. The third question is, can I use Git and Bitbucket, which is not using GitHub, but using Bitbucket instead of GitHub? Yes, you can use Bitbucket without using GitHub, because Git is a software. Bitbucket, GitHub, these are the hosting spaces. So you can use Bitbucket, or you can also use GitLab. Okay, thank you, sir. The next question is, what is the use of add.gitignore and how to use? Can you show us one demonstration of that? Which one? So what is the use of like add.gitignore and one this one, demonstration of using that? Yes. I have shown. See, let me repeat it once again if that's a doubt. See, gitignore is basically used to ignore the files which we don't want to push on the GitHub. So I have also shown its representation using this. You can set any file to not to go on the GitHub server. Next. So there's a question which says that, can you explain what is stash, workspace, and index again? Again, and what I'll explain it once again. But if there is any other question more.
Yes, sir. हाँ, When we make changes in files which is on local repository and which is linked to GitHub, does changes occur in the GitHub repository? हाँ. When we make changes on our local repository, it will not reflect on GitHub unless and until you won't push the code. जैसे ही आपने कोड को पुश कर दिया GitHub पे, तो वो चेंजेस GitHub पे अवेलेबल हो गए. तब तक वो अवेलेबल नहीं हो गए, सिर्फ लोकल पे रहेंगे. Next. Yes, sir. Like that was the last question. Okay. Now only one question is left. Like, what is dash workspace and index again? Let's come over here, Git and stash workspace. Here you will get over here in the documentation, virtual Git sheet. I'll show its with the example. Okay. So this is the stash. This is the workspace. This is the index. This is the local and upstream. Upstream is our GitHub. Local, index, workspace and stash. Upstream हमारा GitHub भी हो सकता है, Bitbucket भी हो सकता है, GitLab भी हो सकता है. Okay. Local repository is Git. Let me come over here and change my project. GitHub project 1. Okay. So this is my local repository. Okay. Index are the changes that I am making up over here. Okay. These are the changes that I am making up over here. Sorry, this is the index and workspace. Like these both are almost common. Stash, जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई भी changes occur किया, okay, all done. So this is the stashing area. Okay, ये सारा कोड यहाँ stash में आ जाता है. अगर इसका अच्छे से एग्जाम्पल देखना है तो मैं मेन पे जाता हूँ, leave my changes over here, switch branch. जैसे ही मैं यहाँ स्टैश में थे लेकिन मैंने ब्रांच चेंज कर दिया तो वो मुझे नहीं मिले. सो दिस इज द स्टैशिंग एरिया. ओके, ये एरिया हमारा स्टैश रहता है. जब भी हम फाइल को चेंजेस करते हैं तो ये एरिया हमारा रहता है स्टैश. हम स्टैश से चेंजेस को लेकर जाते हैं डायरेक्टली, मतलब वर्क स्पेस से हम स्टैश में लेके जाते हैं या वर्क स्पेस से हम इंडेक्स से लोकल रिपोजिटरी कमिट करके वहां से अपस्ट्रीम. ओके, anything else या अगर किसी को ये नहीं समझा हो so let me know. Yes, so there are a few more questions. What is the difference between push and pull command? What is going on GitHub when you use these two commands? Okay, see, push and pull command. Push command pushes your code onto the upstream. See, you can see an arrow over here. Okay, push command pushes your code on the upstream, and the pull or the fetch command, there are two words given for this command. Fetch भी हम यूज कर सकते हैं, वो हमारी लोकल रिपोजिटरी तक के वो कोड को रिटर्न लेकर आता है. ओके, एंड व्हाट वाज द थर्ड वन? Yes, sir, that's all. And then one more question is there. How do we come to our previous version of project using GitHub? हाँ, so I showed you using checkout command. Okay, as you all can see, I am having a very big changes up over here. Let's come back to my master branch. Let's discard these changes. मुझे ये changes चाहिए नहीं. All done. We directly discarded this. I'll show you how to come back to your previous code history. Let me open the code over here. See, you all have seen in this chart we were just having our index page with all these contents. So to see what was up over there, I will copy this SHA. Okay, मैं इसे कॉपी करूंगा. अगर आपको कोई और इजी प्रोसेस मिल जाता है so that will be all much better for you. सोर्स ट्री में डायरेक्ट क्लिक करने से हो जाता है. I'll open the command line interface.
Control J, terminal C, and I will write git checkout. This we are doing to go back to our previous changes. Okay, git checkout, paste, enter. यहाँ हमारा सारा कोड रिटर्न वही आ गया. अब जैसे ही मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ, जंबो हेडिंग, नो गिट गिटहब. ओके, अब हमें रिटर्न वहां पर जाना है, तो सिंपली यूज योर गिटहब, क्लिक ओवर हियर, मेन ब्रांच, and this will bring you back up all the way over there. Feature, main. If it is not coming via this feature, okay, via GitHub, simply git checkout head. Okay, enter. This will directly come bring your code to the main branch. Git checkout head. Okay, what is next? Hello, any other Yes, question? sir. No, sir. That's all for the questions. Thank you so much, sir, for answering all the questions with so much of clarity. I hope all the participants got their answers and have their doubts cleared. Please fill the feedback form, which will be circulated in the WhatsApp group, on the basis of which the certificate will be mailed to you within a week. Now, moving to the last part of our session, which is vote of thanks. As we would like to express our heartfelt gratitude towards our speaker, we must never forget that the highest appreciation is not to utter the words but to live by them. I would like to thank Mr. Danish Sheikh sir for guiding us and honoring us with his time and presence. Thank you for throwing light on one of the important aspects and solving all our doubts. I would like to express my gratitude to Principal of RAIT Dr. Mukesh Patil sir, HOD of IT Department Dr. Ashish Jadhav sir, and Faculty Coordinator of ACM Dr. Vivek Kumar Singh sir. Our heartfelt thanks to all the students for their active participation. With these great learning, we move to the end of today's session. Hope you guys had fun in today's session and learned a lot. ACM will be back with such exciting workshops. Until then, stay tuned. Also, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. I would like to end this informative session with a quote said by Steve Jobs. The ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do it. Thank you and have a great day ahead. Thank you. Take care. Thank you, sir. Thank you.